In last lecture, you became familiar with conjunction. So, what is conjunction? In short, we can say that conjunction is a joining words. Okay? Conjunction is a joining words. The word which is used to join two or more words or two or more sentences. That is conjunction. And you also became familiar with some conjunctions, and that conjunction we are using in our day-to-day life. And that conjunctions are and, but, or, so, if, because. These are some conjunctions that we have already learned. So today we are going to start our last chapter or last topic related to parts of speech. Okay. So today we are going to learn interjection. Okay. Today we are going to learn interjection. So what is interjection? So let's learn with these examples. Look at the following sentence. नीचे कुछ sentence है, चलो हम पढ़ते हैं. Okay. Alas, he died at last. Shh, keep quiet. Oh, excuse me. Yahoo, I got my bat. So these are underlined words. Alas, shh, oh, yahoo. So these words express an emotion or are sudden feelings in these sentences. Okay. These underlined words are express our emotions or sudden feelings. So these types of words are known as interjection in English. Okay. ये जो मैंने वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, alas, shh, oh, yahoo, ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हमारी सडन फीलिंग, हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी इमोशंस है, वो दिखाते हैं. alas मीन्स दुखी होना. alas, he died at last. alas मतलब अरे वो लास्ट में वो मर ही गया. shh, keep quiet. oh, excuse me. Yahoo, I got my bat. So these words are expressing our sudden feelings or emotions. So these types of words known as interjection in English. Okay. For example, तुम लोग रास्ते में चल रहे हो, सामने अचानक सामने तुम लोगों को टाइगर नजर आता है. तुम लोग क्या करोगे? बाप रे, क्या ऐसी कुछ तो भी सडन फीलिंग निकलेगी ना. तो वो जो क्या हो सडन फीलिंग्स होती है वो होता है इंटरजेक्शन. ओके. अगर तुम लोगों के सामने अचानक कोई सांप आ गया तो तुम लोग उसके पास जाओगे हंसते हंसते खेलने के लिए? नहीं. कुछ तो भी जो फीलिंग्स है, घबराने वाली फीलिंग्स है, तुम लोगों के मुंह से बाहर निकलेगी. अरे बाप रे. तो ये सब क्या है? हमारी जो फीलिंग्स है, हमारी जो सडन फीलिंग्स है, सडन इमोशंस जो है, वो एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शंस. ओके. तो लुक एट हियर. व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? एन इंटरजेक्शन इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस एन इमोशंस और सडन फीलिंग्स. इंटरजेक्शन ये एक ऐसा वर्ड होता है कि जो हमारी इमोशंस या तो अचानक सी सडन वाली फीलिंग्स जो आती है वो एक्सप्रेस करता है, वो होता है इंटरजेक्शन. वी यूज देम टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स ऑफ. हम इंटरजेक्शन कब यूज करते हैं? हमारी कुछ सडन फीलिंग्स है, जॉय की सडन फीलिंग्स, जॉय, पेन, सरप्राइज, disgust, grief,
हैं वो सब वर्ड्स क्या होते हैं, इंटरजेक्शन। ओके, पेन, अगर तुम लोगों को बेंच लगता है चलते चलते तो कोई क्या बोलता है आउच लगा, मतलब आउच, दिस आउच वर्ड एक्सप्रेसिंग द सडन फीलिंग ऑफ पेन। ओके, वाव, वाव, दिस वर्ड्स वाव, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तुम लोगों की जॉय वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है। कौन सा वर्ड, वाव, तो वाव ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन। ठीक है, एंगर, फियर, ग्रीफ, दुख, ये जब जो फीलिंग्स है, जो वर्ड्स एक्सप्रेस करते हैं वो होते हैं इंटरजेक्शन। ठीक है, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। An interjection is the word that expresses an emotions or sudden feelings. Interjection एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी इमोशंस या तो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करता है, वो होता है इंटरजेक्शन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, ओ, वाव, हुर्रा, हुर्रे, अलास, आउच, याहू, उप्स, अगर कोई गलती होती है तो तुम लोग बोलते हो उप्स, ये गलत होता है। यस, करते हो तुम लोग यस, अगर कुछ तो भी जीत लिया, कुछ तो भी जो चीज चाहिए थी वो अगर मिल गई तो तुम लोग अपनी फीलिंग्स, अपनी स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग्स कैसे यू एक्सप्रेस करते हो, यस आई गॉट दिस। ओके, तो ये हुआ इंटरजेक्शन। yippee, yippee मतलब खुशी वाला, ये जॉय वाला। ठीक है, हुर्रे, हुर्रे वी वॉन द मैच, मतलब हुर्रे दैट वर्ड इज यूज्ड टू शो योर जॉय, हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पीनेस, इट इज व्हाट योर सडन फीलिंग। ओके, सो दीज आर व्हाट इंटरजेक्शन। ओके, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी इमोशंस या तो सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है इंटरजेक्शन। जैसे कि ओ, वाव, हुर्रा, अलास, आउच, याहू, oops, yes, yippee, these are some interjections. Now I am going to give you some interjection and you have to write down that interjection in your notebook. So here is a list of some interjection. Let's read with me. Some important interjection: ALAS, alas, arere. ALAS, alas, arere. BEGONE, begone, चाहता हो. BEGONE, begone, चाहता हो. BRAVO, bravo, वाह. BRAVO, bravo, वाह. HELLO, hello, काय हो. HELLO, hello, काय हो. HI, hi, अच्छा. HI, hi, अच्छा. HURRAH, hurra, वाह वाह. HURRAH, hurra, वाह वाह. O, अहो, अरे. OH, अरे. OH, अरे. SH, चुप. SH, चुप. WOW, वाह. WOW, वाह. TUT, tut. TUT, tut, छी. TUT, tut, छी. What? WHAT, what? कार. WHAT, what? कार. HUSH, hush.
our emotions or sudden feelings. That is interjection. ओके, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो हमारी फीलिंग्स, सडन फीलिंग्स या तो इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है। जैसे कि ये है इंटरजेक्शंस। कोई अगर दुख की एक्सप्रेशन, दुख के इमोशंस है हमारे, तो हम अल्लाह यूज करते हैं। ओके, वी यूज देम टू express our feeling of joy, anger, fear, grief. Okay, these are what? These are the feelings of our, and for expressing that feelings or emotions we can use interjection. Okay, now let's turn to the practice section. So take all the points related to interjection in your mind and let's solve this exercise. Okay, so I am going to read the question. Underline the interjections in the following sentences. Here are some sentences having interjection. Okay, ये जो sentence है वो उसमें interjection है. So what is interjection? An interjection is a word which is used to express an emotions or sudden feelings. एक interjection एक ऐसा वर्ड है जो हमारी इमोशंस या तो सडन अचानक वाली फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड्स यूज होता है, वो होता है इंटरजेक्शन। कुछ इंटरजेक्शन भी हमने पढ़े जैसे कि अलास, बिगॉन, हुर्रे, ओ, वाव, yippee, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन। So here are some sentences having interjection. So you have to find out the correct interjection and underline them. Okay. So look at the first sentence. Wow, I won the lottery. So which is the interjection here? Wow, I won the lottery. So wow, it is an interjection. Next, oops, I spilled my milk. Oops, I spilled my milk. So which is the interjection here? Answer is whoops. Okay. Third, hooray, we won the match. Hooray, we won the match. So which is the interjection? Easy. It is hooray. Okay. Next. Yes, I won the contest. Yes, I won the contest. So which is the interjection? Right. It is yes. Okay. Next. Yippee! It's finally summer vacation. Yippee! It's finally summer vacation. So, which is the interjection here? Interjection is what? Yes, right. Yippee! Okay. So, these are the conjunction. Okay. So, I hope you all understood the topic. Okay. So, this is the last part of our parts of speech. So in English there are total 8 parts of speech and we have learnt all the parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and interjection. These are the 8 parts of speech and we have learnt it. So you have to read all these notes related to these 8 parts of speech.
total 8 parts of speech in English: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and interjection. Okay, so revised all these parts of speech at home. Thank you and have a nice day.